Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So let's start. Sir, good evening. Good evening. Yes. So our shipping address form is ready. Only which we have to include is you have to integrate the API. And on the successful API, when it hits, then we are going to change or we are going to set it inside the list. So what I can do, so here we have to call the handle submit. So on this button, I'm going to handle on click event handler and call this function handle submit. Handle submit. So yes, I'm going to make an arrow function here. So सर मेरा MongoDB कनेक्ट नहीं हो रहा है. जस्ट उनसे बात करो जो भी तुम्हारे वो है क्या है काउंसलर. काउंसलर तो नहीं करेगा यार तुम्हारे जो डाउट्स लेते हैं. तो यस, तो मैं इस बटन पे एक टाइप दे दूंगा. जो ये टाइप होगा ये सबमिट होगा. सर सागर को एक्सेप्ट कर दीजिए, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है. Okay. So yes. So yes. So you have handle submit, or you can call this handle submit on this on click. Rather than you can use this button type on click, or you can use this as well. You have to go on the form and you can use, instead of using on click, you can use on submit. So yes, and now you have a handle submit and you can capture the event here and you can call event.prevent default. Right. And yes, that's it. And here, what you have to do, you have to import the action. So import, and what are the action? You have to go inside shipping actions and save the save shipping details. So yes, inside the pages, shipping details, you can simply import save shipping details from actions and then shipping actions. And yes, what you can do here, you have to call. So you have to import dispatch as well. So I'm going to import it. So import use dispatch from React Redux. And what you can do, you can call this React Redux here. So from dispatch is equals to use dispatch. And yes, so what
you can do, you can simply dispatch an action. So what is your action? Your action is save shipping details and call this function. And I think we are done with this. And let me check. So you are going to dispatch the save shipping details, which wants this product form data as a payload. So what you can do, you can simply pass uh, this shipping details state inside this. Yes. So when you go inside it, and you can simply console or console a product form data. So if the product form data is present, if the product form data is present, then you can get there. Otherwise, it shows some error. So yes, I can go here. Let me open my console. And now I'm going to pass name. So others@ekida.com. And sorry. Okay. So it is also email. Okay, so let me change it. Inside shipping details, what I can do, enter your email, enter your address. But what is the problem? Enter your mobile number. So let me refresh it. Yes. So name is others. Or we have already others data. So I'm going to do it Nihal. Nihal@ekida.com. Address is 62. Yes. Landmark. Noida 201301. So let me dispatch this function. So I'm going to dispatch it. And yes, you have all the data inside the product form data. So you have successfully get this data here, product form data. So yes, now it is done. Only I have to check my network request. So what is inside a network tab? Let me check. And I think, yes, it is created. The data is created. So let me check the MongoDB. So I have to log in it with others Ekida. I'm not sure about the MongoDB. Okay. So others Ekida. Okay.
You are with him. Yes. So inside shipping, you have this data, nihal@ekira.com, and all the required data. So yes, it is good, but I want what? So I have to modify something inside the shipping details and all. The thing which we have to implement is, so when I hit this API, then we are going to hit this on API/shipping/address. So the problem is that we have no user ID corresponding to that address which you are going to save inside the database. So inside the database, you have nothing, a user ID or anything related to that, because the problem is that, so we don't know what exactly the shipping detail corresponds to which user. We don't know about this. So we don't know about the user ID or or the corresponding user of that address or that shipping details address. So you have to modify the API as well as in our front end, so you can get this user ID data inside that shipping address. So what I can do here, so I have to go inside my backend, and yes, we have a shipping controller. So before doing inside the shipping controller, I'm going inside my shipping routes. And on the shipping routes, what I can do, I can simply make pass the user ID as well inside the parameter. So this is the user ID which we have to pass from the front-end API request. And now I'm going inside my shipping controller, and here what I can do, I can get this data or something like this. Give me a second. So we have a product routes, product controller, where when I save this product data, then what we have done here, give me a second, not a product. So we have to go inside the category controller. So when I have met this create category controller, then what we have done, we have find the what we have not we have created the category, and that's it. So yes, it is inside the product. I must have to check. Yes, create a product. So let me check what we have done here. So fields and not new fields. So what I can do, I can get this data or user data, and yes. So अब देखो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए कि जब डेटा सेव हो ना, किसी भी शिपिंग डिटेल सेव हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग उस यूजर की आईडी भी सेव हो, जिससे क्या हो कि जब भी तुम उसकी डेटा को गेट करो तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें यूजर आईडी, उस यूजर का भी डेटा क्या हो, उस यूजर का भी डेटा हमें मिल जाए. समझ पा रहे हो मेरी प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट वी हैव टू डू हियर. Yes, sir. ओके ग्रेट. सो आई कैन डू वन थिंग. ईमेल आईडी के भी हम, हेलो सर, Yes. जो ईमेल आईडी अवेलेबल है हम लोग उसके बिहाफ पे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ईमेल आईडी Yes, तो yeah. यूनिक ही रहेगा, उससे लॉगिन करेगा ना.
यस, दैट्स गुड अप्रोच, तुम सही बोल रहे हो। बट इसके लिए हमें फिर ईमेल आईडी की वैलिडेशन करनी पड़ेगी फ्रंट एंड पे कि इज दिस ईमेल आईडी इज ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईमेल यू कैन गेट, दिस इज अ गुड अप्रोच। कौन था ये? हु इज दिस? अफजल सर। Nice, good approach. So yes, you have two different approaches for this. You can save this user ID details inside the shipping address, um, when you are going to create it. But you have the second approach as well. You can get that only email ID of that user. So आप क्या कर सकते हो कि अपने फ्रंट एंड पे यहाँ पे जो ईमेल आप गेट दे रहे हो ना, ईमेल फिल करवा रहे हो, ये आप ईमेल क्या करो कि इसको डिसेबल कर दो और इसमें वही ईमेल जाए एज अ पेलोड जो यूजर लॉग इन करा हुआ है, जो यूजर लॉग इन करा है। तो यस, इट इज अ गुड अप्रोच एंड आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू गो विद दिस अप्रोच। सो अब मैं क्या करूंगा कि अब मुझे यहाँ यूजर को पहुंचाने से अच्छा कि मैं सारे राउट्स में चेंजेस करूं एंड ऑल, तो मैं काम कर सकता हूँ जो अफजल ने मुझे सजेस्ट करा है। और ऐसे सजेशंस दोगे तो बढ़िया है, बहुत अच्छा सजेशन है, नाइस। सो आई कैन डू वन थिंग, सो आई हैव टू गो इनसाइड माय फ्रंट एंड एंड वी आर इनसाइड द शिपिंग डिटेल्स। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे लॉगिन रिड्यूसर से हम डेटा निकाल लेते हैं उस यूजर का ईमेल। सो आई हैव टू डू दिस। सो फर्स्टली यू हैव टू इंपोर्ट व्हाट यूज सेलेक्टर। यही तो फायदा है तुम्हारे रिडक्स का कि तुम्हें डेटा पॉपुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, सीधा तुम गेट कर लेते हो डेटा तुम्हें जहां भी चाहिए। सो हमने इतना रिडक्स का प्रैक्टिस करा है कि इट इज गुड फॉर अस। सो लॉगिन डेटा is equal to use selector, and now you can get this state. So state dot user login user तो login reducer dot I think login info है ना, login info. So simply you can do this. पहले लॉगिन इन्फो देख लेते हैं, लॉगिन डेटा, और लॉगिन डेटा को एक बार कंट्रोल करके आप चेक कर लेते हैं कि क्या लॉगिन डेटा हमें मिल रहा है। तो कंसोल देखते हैं और यस, लॉगिन डेटा में डेटा आ रहे हैं एंड वी हैव द ईमेल एज वेल। सो आई कैन सिंपली एब्स्ट्रैक्ट दिस ईमेल फ्रॉम हियर। मैं क्या कर सकता हूँ, ये ईमेल एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, इस ईमेल को मैं, ये जो है ना एंटर योर ईमेल, इस पे मैं ऑन चेंज को ट्रिगर नहीं करूंगा एंड मैं इसमें सीधा एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाऊंगा और ईमेल पास कर दूंगा और मैं इसको डिसेबल्ड भी कर दूंगा। डिसेबल्ड एक प्रॉपर्टी है MUI के कॉन्टेक्स्ट फील्ड के साथ जो तुम्हें उसको डिसेबल कर देगा, उसको तुम्हें कुछ भी उस पर लिखने नहीं देगा। तो वैल्यू मैंने ईमेल कर दिया। तो यस, अब देख रहे हो जब भी तुम इस पेज पे आओगे तो जो भी यूजर का ईमेल होगा वो ऑलरेडी इसमें फेच हुआ पड़ा रहेगा। इज इट मेक सेंस? यस सर। है ना, समझ पा रहे हो ना? यस। अब तुम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो डेटा, इसके प्लेस होल्डर में एंटर योर एड्रेस होगा या लेवल तो वही है, और ये ऐसा प्लेस होल्डर ले क्यों रहा है? अच्छा एड्रेस है, मेरे को ईमेल दिख जाता है ये, पता नहीं क्यों। ठीक है, एड्रेस हो गया, मैंने फोन नंबर डाल दिया। अच्छा मुझे एक बार ये भी करना पड़ेगा ना, डिस्पैच कर रहा हूँ तो यहाँ कंसोल लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो मैं कंसोल करने के पहले वही देख ले, यहीं पे लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे फिर वो सेव कर देगा वो जाके देगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जो कंसोल है वो कंसोल रहने देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अरे कोई है क्या? ठीक है, so I can do this console.log
And here, what I can console, I have to control the shipping details. So the shipping details, and that's it. Let me check our control browser. So, okay, पिन कोड डाल दिया, बट ईमेल मेरा एम्प्टी आ रहा है. ईमेल मेरा क्या हो रहा है? एम्प्टी आ रहा है. सो आई हैव टू गिव समथिंग, नेम एंड वैल्यू. तो ईमेल पे नेम भी है, वैल्यू भी है, सो ले क्यों नहीं रहा है? तो ठीक है, मैं एक बार हैंडल चेंज को कॉल कर देता हूँ. अरे ऑन चेंज करूँ और देखता हूँ. ऑन चेंज इज इक्वल्स टू क्या था? हैंडल चेंज. तो मैं एक बार फ्रेश करता हूँ. अच्छा, वो नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया. तो व्हाट आई कैन डू, ईमेल नहीं लिया ना, क्योंकि हमने वैल्यू लगाया हुआ है. तो अगर मेरा वैल्यू स्ट्रिंग रहता है तो लेता है क्या? ईमेल इज असाइन्ड बट नेबल यूज्ड. तो लेट मी कमेंट. तो कमेंट करने पे वो भी प्रॉब्लम करेगा, तो मैं कंसोल ही लगा लेता हूँ ना. ठीक है. यार शिपिंग डिटेल्स क्यों नहीं करा? console.log और ये shipping details and that's it. Okay. ईमेल नहीं आया, कोई बात नहीं. तो अब इस ईमेल को पॉपुलेट करने के लिए व्हाट आई कैन डू, मैं ऑन चेंज हटा देता हूँ और वैल्यू में मैं ईमेल भेज देता हूँ जो हमने गेट करा था. और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जब मैं इसको सेट कर रहा हूँ तो जब भी मेरे पास ईमेल आए और ईमेल आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी स्टेट को इस वाले सेट शिपिंग डिटेल्स में मैं इसकी ईमेल की वैल्यू पुश कर देता हूँ. तो यस आई कैन डू दिस. तो देखो कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर है शिपिंग डिटेल्स ऑब्जेक्ट के अंदर ये ईमेल की वैल्यू इंसर्ट करानी है. सो व्हाट इज द अप्रोच? सो आई कैन डू वन थिंग, मैं एक यूज इफेक्ट कॉल करता हूँ. देखो यूज इफेक्ट का कॉलिंग समझ में आया ना, कब कब रिक्वायरमेंट होता है. सो यूज इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन यू हैव टू लाइक कोई फंक्शन कॉल करना है, जब भी उस पेज पे कोई आ रहा है या कोई स्टेट चेंज हो रहा है, देन यू हैव टू कॉल दिस यूज इफेक्ट. एंड दिस इज बेसिकली a life cycle method of the React in the functional based components. So firstly we have to import this use effect. So yes, it is imported now. Good. And now you have to pass this dependency array. और इस डिपेंडेंसी अरे में क्या होता है कि जब भी ये ईमेल चेंज हो, तब तब ये कॉल होना चाहिए. जब भी कोई नया यूजर लॉगिन करेगा और ईमेल चेंज होगा, देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड. एंड यस, ठीक है. तो नाउ ठीक है, आ रहा था क्या? हाँ. सो यस, हाँ. तो आई एम गोइंग टू डू समथिंग कि जब भी ईमेल चेंज हो, ये यूज इफेक्ट कॉल हो. और अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस जो सेट करा रहे हैं हम शिपिंग डिटेल्स को, उसको उसमें हमें सेट कराना है क्या
तो सेट शिपिंग डिटेल्स, और इस सेट शिपिंग डिटेल्स के अंदर आई कैन टेक एज एन कॉल बैक प्रीवियस स्टेट। तो जो भी पहले से इसमें होगा वो पहले से रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पहले तुम्हें प्रीवियस स्टेट का वो स्प्रेड करना होगा, एंड नाउ देन व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हो कि तुम्हें उसके नेम के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू डालनी है। सो नेम के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू डालनी है। सो ईमेल शुड बी व्हाट, email should be what, email. Okay. क्या गलत गलती हो गया, प्रीवियस स्टेट, अच्छा बिकॉज प्रीवियस स्टेट में मुझे ये ऑब्जेक्ट लेनी है, तो यस आई हैव टू डू दिस। ओके, आई हैव डन रॉन्ग हियर। तो क्योंकि मुझे ये एज ए कॉल बैक लेना है तो मुझे इसके अंदर डालना होगा, मैंने गलत जगह लगा दिया था। एंड दैट्स इट। लेट मी चेक, कि अब क्या होता है। तो मैं जाता हूं अपने कोड पे, और अभी हमारे ईमेल पे, यस देखो अब शिपिंग डिटेल्स के अंदर पहले से तुम्हें ईमेल मिल रहा है ना। इज इट मेक सेंस गाइस? गाइस बताओ, कोई तो कुछ बताओ, समझ आ रहा है ये क्या कर दिया मैंने? Yes, मतलब sir. मैं ये जो ईमेल आ रहा था, जो मैं सेलेक्टर से डेटा गेट कर रहा था, उसको मैंने इस यूज इफेक्ट में कॉल कर दिया कि जब भी ईमेल चेंज हो, जब भी ईमेल आ रहा है, ये यूज इफेक्ट कॉल हो जाए। और जैसे ही यूज इफेक्ट कॉल होगा, मैंने क्या किया, शिपिंग डिटेल्स वाले स्टेट को सेट करा दिया। उसमें मैंने पहले प्रीवियस स्टेट लिया कि जो भी पहले से इसके अंदर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसकी वैल्यू को ले लो। और अब क्या करना है तुम्हें कि जो ईमेल वाली फील्ड है, जो ये ईमेल वाली फील्ड है, इसको अपने वाले ईमेल से जो हमने यहाँ गेट करा है उससे चेंज कर दो। तो उसने उसको चेंज कर दिया, है ना, सही चीज। तो देखो, कोड रटना नहीं होता, बस वो लॉजिक दिमाग में होना चाहिए, और जब तुम प्रॉब्लम में हो तो तुम्हें फिर वो लॉजिक ट्रिगर करके वो चीजें हैंडल करनी होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने कर दिया। अब मैं कोई भी डेटा चेंज करूंगा इसके अंदर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा ईमेल तो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब क्या है कि यूजर कोई ऐसा ईमेल पास ही नहीं कर सकता जो ईमेल उसके डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता हो। समझ पा रहे हो, है ना? तो ठीक है, तो यस इट इज ऑलरेडी डन, एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, I have to make another API to get all the shipping details of that particular email. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक एपीआई बनानी पड़ेगी। तो मैं शिपिंग कंट्रोलर के अंदर पहले मैं उसकी राउट डिफाइन कर देता हूँ। सो इनसाइड द शिपिंग राउट्स आई एम गोइंग टू डिफाइन राउटर डॉट गेट, और ये हो जाएगी तुम्हारी गेट शिपिंग डिटेल्स, एंड दिस इज व्हाट शिपिंग कंट्रोलर है। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, सेफ शिपिंग कंट्रोलर। तो ये मुझे राउट में भी चेंज करना होगा। तो एक और प्रॉब्लम है इसमें, जो मैंने नेम चेंज करा है वो मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे गेट कर पाऊंगा भाई। तो
सेफ शिपिंग कंट्रोलर नहीं आ रहा है, कोई नहीं, पर देख लेते हैं। इंपोर्ट शिपिंग, अच्छा, तो ये है तुम्हारा सेफ शिपिंग कंट्रोलर। सेफ शिपिंग कंट्रोलर एंड शिपिंग राउट्स के अंदर shipping controller or safe shipping controller, and that's it. So let me check. Yes, now it is working good. So here you have to make another function, export font and get shipping details. Get shipper, sorry. So I'm going to copy it. So this is our function. It is basically a synchronous function. So yes, and now what you can do, you can just get this data, something like this. So when you get this data, get all categories. So you are going to find, you are going to query a find query builder of the Mongo database. So what I can do here, so yes, okay. So I will do this. So yes, const data is equals to what? Shipping details. So first you have to import, you have to find a query. So this, so await, because you are going to query on the database. So shipping dot something like this. Product find by ID. So I'm going to use find by email and find by email. Give me a second. Okay, give me a second here. Yes. So find by email, and then you can pass. So you have to take request and response as a parameter. So you can go, you can do something like this: request dot body dot email. Does it make sense? So I'm going to do console here. Console dot log data in backend, and yes, this data. So it is printed inside our backend console. So let me check, or let me hit there
So I have to pass this as well, get shipping details here in export. So I can import it. Okay. Get shipping. Okay. Shipping routes. And here you have to import it and just pass it here as a controller. So that's it. And yes. Okay, so I have to save it because it is not saved yet. So yes, that's it. Why Node.js is crashed? So shipping routes, it is crashed now. सर शायद यूजर आईडी का जो राउट सेंड मतलब दिया था ना राउट में हमने उसके लिए ये राउट में तो हमने ऐसा डाला नहीं है अभी. Maybe the problem is this. ठीक है. अच्छा मैंने कॉन्स बनाया, मैंने एक्सपोर्ट नहीं करा ना, तो ये एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं हम यहाँ? तो एक्सपोर्ट नीचे कर ही रहे हैं, है ना? तो ओके, लेट मी चेक my route again. Yes, it is good, but problem is different. Shipping controller. So shipping controller. So yes, it is exported successfully. ठीक है, मैंने नाम चेंज करा है, इट मे बी बिकॉज ऑफ दिस, बट ये तो हमें पहुंचा ही रहा है यहाँ पे. गेट शिपिंग डिटेल्स भी पहुंचा रहा है. तो लेट मी क्लोज दिस टर्मिनल एंड लेट ओपन इट अगेन, बिकॉज अब देखते हैं ये क्रैश करा है. तो शिपिंग राउट्स मतलब इसको ये नहीं मिल रहा है, इंपोर्टेड फ्रॉम शिपिंग कंट्रोलर नहीं मिल रहा है. ओके 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 ओके. So problem is what? Inside the backend folder, we have to use the .js syntax to import. So this is the problem, and now it is successfully connected to our database. That's cool. So let me check their API. So I'm going to use, this is the create API. Let me make the request. Let me make the request on this. So yes, API slash, give me a second. So I have to check it inside the app.js. So API slash shipping. So API slash shipping. And then inside the shipping route, we have get shipping details. So get shipping details. So I'm going to remove it. Get shipping details. And yes, I think, ओके ठीक है, बढ़िया है. तो हमने इस एपीआई पे हिट मारना है. तो आई एम गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट हियर, एंड आई थिंक देयर इज सम एरर हियर. सो ओके, सो कोई भी बैकएंड के टर्मिनल में कंसोल नहीं आया है और हमारा एपीआई भी फट रहा है. ओके, सो हो सकता है कि हमने रिक्वेस्ट सही जगह नहीं बनाया है, राउटर डॉट गेट करा है, गेट शिपिंग डिटेल्स है, तो ये राउटर इसको मिल नहीं रहा है. तो एपीआई स्लैश शिपिंग, एपीआई स्लैश शिपिंग. अच्छा, बिकॉज दिस वाज द प्रॉब्लम आई थिंक. लेट मी चेक. Once it is connected to our database, yes, now I'm going to hit the send request again. And yes, now the problem is find by email is not a function. So it may be because of
find by ID. So find by ID, okay. So find by email. So let me check. Find by email. Find by email. Query builder in MongoDB. Okay. Find by email. WP school. ये यार MongoDB नहीं है. Find one. Find. ओके. तो फाइंड बाई ईमेल नहीं है क्या MongoDB में? मैंने गलत जगह तो नहीं करा है. हो सकता है फाइंड बाई आईडी. अच्छा अच्छा अच्छा. मैंने सही तो क्या बोल रहा है अब? शिपिंग डॉट फाइंड बाई ईमेल इज नॉट अ. ठीक है, तो हम ईमेल की बिहाफ पे नहीं कर सकते हैं. मतलब फाइंड बाई ईमेल कोई क्वेरी पैरामीटर नहीं होता है. सॉरी, कोई क्वेरी बिल्डर नहीं होता है MongoDB के अंदर. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू क्वेरी ऑन द यूजर, और यूजर से हम उस ईमेल के बिहाफ पे आईडी निकालेंगे. और फाइंड बाई आईडी भी तो हम सेव नहीं कर रहे हैं, तो ऑन दी, और हमें ईमेल मिल नहीं रहा है. तो मैं करता हूँ फाइंड ही लगा देता हूँ. जैसे और जगह अगर आप देखोगे, तो जब मैं फाइंड करता हूँ तो मैं फाइंड लगा के और ईमेल पास कर देता हूँ. तो ये मेरा वर्क कर जाएगा आई थिंक. तो लेट मी चेक. फाइंड से करके देखते हैं कि हमने ईमेल तो पास करा ही है. अगर उस ईमेल के भी आप पे जो जो डेटा है वो डेटा ला के दे दो भाई. सिंपल है. तो लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट अगेन. And yes, we have the data inside the backend. और जो ईमेल हमारे यूजर साइड से जा रहा है, अगर मैं गेट कर रहा था, बट गेट करते टाइम मैं कोई ईमेल तो भेज नहीं रहा था. समझ पा रहे हो मेरी बात को? प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अब मैंने थोड़ा गलत तरीके से हैंडल करने की कोशिश करा है. मैं शिपिंग डिटेल्स मांग तो रहा हूँ, बट उस शिपिंग डिटेल्स में मुझे उसका ईमेल भी तो पास करना पड़ेगा एपीआई के अंदर. किस यूजर का हमें चाहिए डिटेल. इज इट मेक सेंस? अभी तो तुम कोई ईमेल पास कर रहे हो क्या एपीआई से? कोई भी ईमेल तो पास नहीं कर रहे हो. नहीं कर रहे हो ना? तो इधर तुम्हें पैरामीटर में ईमेल भेजनी पड़ेगी, और नहीं तो तुम्हें किस में भेजना पड़ेगा? बॉडी में भेजना पड़ेगा. अब तुम बताओ कि किस में भेजना चाहोगे. अभी मैं जो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गेट शिपिंग डिटेल्स, मतलब डेटाबेस में से मेरे को उस ईमेल का लाके दे दो सारा डेटा. तो क्या मेरे पास कोई, मैं ईमेल भेज रहा हूँ इधर अभी कहीं से भी, तो मुझे ईमेल भेजना भी तो पड़ेगा ना. कुछ तो बोलो सब, है ना? यस सर. तो अब मेरे पास दो वेज है. एक तो मैं गेट रिक्वेस्ट के अंदर भेज दूं ईमेल को,
एज अ पैरामीटर, और या मैं बॉडी में भेज दूं। तो अगर मुझे बॉडी में भेजना पड़ेगा तो मुझे ये रिक्वेस्ट गेट छोड़ के पोस्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं वही करता हूँ कि बॉडी में ही ईमेल भेज देता हूँ, बॉडी में ही ईमेल भेज देता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, कैंसिल करते हैं रिक्वेस्ट को और मैं बनाता हूँ इसको पोस्ट रिक्वेस्ट। तो मेरे पास जो शिपिंग राउट्स हैं, इसको मैं बना देता हूँ पोस्ट। अब देखो, मैंने पोस्ट तो बना दिया, तो मुझे अब इस गेट शिपिंग डिटेल्स में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ईमेल मिलेगा। तो मुझे अपनी एपीआई में अब इसको चेंज करके पोस्ट रिक्वेस्ट बनाना होगा और बॉडी के अंदर एज अ रॉ जेसन डेटा हमें ईमेल पास करना पड़ेगा। तो लेट मी सेंड दिस ईमेल, और अभी तक हमारे डेटाबेस के अंदर वी हैव others@test एंड nihal@ekeeda.com। दो ही है। तो अभी जो हमारे पास है, जो मैं सेव कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं एक रिक्वेस्ट एपीआई पे हिट करता हूँ शिपिंग एड्रेस के लिए, others@ekeeda.com है। तो क्योंकि ये मेरा, अच्छा, और इसमें तो चलो मैं आदर्श, क्योंकि मेरे को वो ईमेल पे भेजना है तो मैं भेज देता हूँ आदर्श और ग्रेटर नोएडा और मोबाइल नंबर इज दिस। सॉरी यार, ठीक है, लैंडमार्क कुछ भी डाल दो, नॉलेज 2 201 306, and yes, now I'm going to save it. And yes, API फट गई है तुम्हारी, और API क्यों फटी है? So let me check. शिपिंग एड्रेस मैंने कुछ गलत कर दिया। बैकएंड पे देख लेते हैं। यार यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सो फटी क्यों है? पोस्ट रिक्वेस्ट तो है, सेव शिपिंग डिटेल्स। सो लेट मी रिफ्रेश दिस पेज, और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार अपना रिक्वेस्ट सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ अगेन। And yes, now I can send this request from here. Others, that again, issue road, and this. And let me hit this API again. And yes, why it is 404 क्यों हो रहा है? मैं गलत API shipping slash address। तो अच्छा, मैं यूजर आईडी पे भेज रहा हूँ ना सेव पे, और मैं रिक्वेस्ट बना रहा हूँ किस पे, हेडर देखते हैं, API slash shipping slash address पे। तो मुझे उसकी यूजर आईडी भी भेजनी है, और क्या मैं उस यूजर आईडी की बिना पे कुछ करवा भी रहा हूँ? तो नहीं, ठीक है, गिव मी अ सेकंड। यूजर आईडी तो मैं उधर से बोल रहा हूँ कि भैया मुझे यूजर आईडी चाहिए, बट मेरे पास यहाँ यूजर आईडी मैं सेव करा नहीं रहा हूँ, तो मैं चेंज कर देता हूँ ना राउट फिर।
क्योंकि अब तो मैं डेटा भी वहां से निकाल लूंगा, तो मैं मुझे ये यूजर आईडी भेजने की जरूरत नहीं है। तो now it is done. Let me this API again, and yes, it is created. So inside the MongoDB, and when you refresh this page, you have existed data. Yes. So others@ekida.com, and what you have sent it, others@ekida.com. And again, if you send this data with another address, Nihal, and now you can change it to Delhi, and this is the mobile number, and this is the not place. Okay. Can save it, and it is okay. So basically, I have to my DB is crashed now. So again, start the server, and yes, now hit this API. But yeah, so I have to like let me refresh this page. See, Ghaziabad, and 51 05 607. अरे यार, बैट रिक्वेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों फट रहा है ये? रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो कह ही रहे हो तो चल जाओ। फिर भी फटा। Okay, now I think it runs. Again, start the server, and now hit the API. Hmm. Hmm. यार क्या प्रॉब्लम है?
हेडर सेट क्या प्रॉब्लम है इसमें? हेडर सेट करने का क्या इशू आ गया इसमें? अल्लाह, सेव क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया? चेंज भी तो नहीं करा है। सेव शिपिंग कंट्रोलर, डेटा भी आ रहा है। क्रिएट करा, dot status dot json, response dot status, response dot status dot json dot json के अंदर एपीआई से मैं हैक करके देखता हूँ यार, इजी करता हूँ। हम्म, एक तो मैं टर्मिनल इसीलिए बाहर खोलता हूँ। यार मेरा जेसन भेजता ही नहीं हूँ। क्या इशू है यार? क्या प्रॉब्लम आ गया इसमें? नोट क्रॉस क्रैश हो जा रहा है। हम्म, खुल जाओ भाई। अरे यार, विंडोज के साथ ये इतना बड़ा भसड़ है ना ये, सस्ते में। हाँ, ठीक है यार। अच्छा मैंने क्या चेंज कर दिया इसमें? हेडर रिसेट नहीं हो रहा है। रुक जाओ, लेट मी रिक्वेस्ट ऑन API स्लैश शिपिंग स्लैश एड्रेस। मैं इसमें पोस्टमैन भेज करके देखता हूँ।
और ये है तुम्हारा पोस्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। बॉडी में रॉ डेटा जेसन डेटा जाता है and inside this payload I am going to copy this. So address should be like this. Yeah. Email should be landmark should be this. Mobile should be okay. Let me close this server. I don't know why this occurs again and again. क्या प्रॉब्लम हो सकता है? डेटा क्रिएट ही कर रहे हैं, डेटा है तो रिटर्न कर दे रहे हैं. Let me, if response dot status मेरे को कैच करने दो डेटा. एरर इज, मुझे यहाँ पे एरर मैसेज को सेंड करवाने दो, तभी कुछ हो सकता है, तभी पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है. बैड रिक्वेस्ट है. again and again. सेट से आ रहा है cannot set headers after they are sent to the client. मैंने ऐसा क्या कर दिया इसमें? / shipping / address. It's simple यार. सेव करते टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ. प्रोडक्ट लाया, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करा, वेट करा, फीड
Get response dot status. Get a response dot status. Dot JSON. JSON में मैंने data about name. Data on address. प्रॉब्लम पता नहीं क्या है यार। यही होता है, कभी स्टक हो गए किसी चीज में तो टाइम लगता है, फिर वो थोड़ी R&D एंड ऑल करनी पड़ती है, क्या ही करोगे। डायरेक्ट रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर पे, और मैंने हेडर भी ऐसा कुछ सेट नहीं करा है, सर्वर भी मैंने क्लोज कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या है? हम्म, रिक्वेस्ट भी हमारा पोस्ट टाइप का है। ये तो यार रिक्वेस्ट बार बार बनाने से होता है सेम टाइम पे। मुझे थोड़ा गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। हम्म, हम्म, मैं कुछ सेट ही नहीं कर रहा हूँ। Maybe due to this, ये तो यार मैं यहाँ कंसोल लगा के देखता हूँ। ये आ रहा है, नेम एंड एड्रेस आ रहा है, बट ये कंसोल हमारा नहीं चल रहा है। कुछ हम डिप्रिसिएट कर गया है क्या, कोई ऐसा पैकेज जो हम यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएट कर गया, तो मुझे उस पैकेज के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, सो मीनवाइल व्हाट वी कैन डू,
अभी भी तो क्रिएट करे थे हम डेटा, हमने अभी भी तो डेटा क्रिएट करा है. Let me just do something here. इसको चेंज करते हैं, जैसे था वैसे रहने देते हैं. बट हाँ ठीक है, रहने देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कैस्ट का इशू हो. बट हमने तो वैसे भी कोई काम नहीं करा है. ठीक है, और हमारे पास शिपिंग राउट्स में एड्रेस था. ठीक है, एड्रेस एपीआई. तो कहाँ इंपोर्ट कर लिया इसको? मुझे लग रहा है ना VS कोड में भी एक बार मैं बंद करके टर्मिनल फिर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये परेशान कर रहा है. कोड I don't know यार, what the hell it is going inside the backend. So let me check my app.js as well. हमने चेंज किया क्या? ये हमारा हमारा फोल्डर तो ये है. हाँ, एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. समझ में नहीं आ रहा है कि हेडर सेट क्यों हो रहा है दोबारा. ओह, sent to the client. Server will send more than one response for a single request. Calling response.json twice. तो response.json को मैं twice कहाँ भेज रहा हूँ? मैंने भेजा if data return response.status. Response dot वो तो कैच ब्लॉक में है, ट्राई ब्लॉक में तो हम एक ही बार भेज रहे, रिटर्न करा रहे. ठीक है, रिस्पॉन्स
Okay, I have to check it. What is the exact problem behind it? So it takes some time to resolve me. So क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ इसमें, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट फिर भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रहा है? सो आई हैव टू टेस्ट इट. इज इट ओके फॉर यू गाइस? आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है. वी विल लुक ऑन इट टुमारो की प्रॉब्लम क्या है इस पे. ठीक है गाइस? ओह यस, क्योंकि मुझे ट्रैक करना पड़ेगा कि बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रहा है. एक्चुअली जो ये एरर होता है जब हम मल्टीपल रिस्पॉन्स, एक रिक्वेस्ट के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, तो ये एरर आता है. बट यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं सिंगल रिस्पॉन्स विद द डेटा. तो आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है. हो सकता है कि मुझे इट मे बी मुझे अपने सिस्टम को ऑफ करके ऑन करना पड़े, बिकॉज या हमें नोड मॉड्यूल्स अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल दोबारा करना पड़े. सो आई कैन ट्राई वन थिंग हियर. तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक बार नोड मॉड्यूल्स उड़ा के देख लेता हूँ. तो npm install and now npm run server. इससे कोई बड़ा फर्क पड़ना नहीं है, बिकॉज सर्वर से पैकेजेस का कोई लेना देना है नहीं, ये चला भी नहीं. मैंने किसी भी यूजर आईडी का कुछ छेड़छाड़ करा था, ये तो मुझे पता है. बट कब करा था ये, मैंने किस फाइल में करा था? यूजर आईडी एड्रेस पे तो भेज ही रहे हैं. एक बार मैं हेडर देख लेता हूँ. एक्सेप्ट कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट में एप्लीकेशन स्लैश जेसन कर देते हैं. ये एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन. Okay, so we will try this thing tomorrow. कि क्या कर सकते हैं, मैं कुछ फाइलिंग लेके आऊंगा कि इसमें क्या हमारे साथ प्रॉब्लम है. So I have to look on it. Meanwhile, we can do one thing. We can go through our Braintree things for the payment gateway. So we have to integrate as well. So कल के लिए हम इसकी API में मैं देख लूंगा प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारा नोडमैन क्रैश कर रहा है. और दीज आर सम ऑब्वियस एरर्स जो कि बार बार आते हैं, और इसके एग्जैक्ट रीजन क्या है वो थोड़ा सा डीप जाने के बाद पता चलेगा. तो वी विल लुक इनटू इट टुमारो, और हम वही पे इंटीग्रेट भी करेंगे. तो मोस्टली ऑफ दी चीजें हमारी शिपिंग एड्रेस की कंप्लीटेड है. सो फॉर दिस व्हाट आई कैन डू, सो वी आर गोइंग टू फिक्स दिस इशू टुमारो. So meanwhile, we are going to set up the account on Braintree, and what are the Braintree and what are the things which is needed. So we are going to discuss these. Okay. So firstly, Braintree के डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और अपने अकाउंट्स की क्रिएशन एंड ऑल को कंप्लीट करते हैं. सो बेसिकली ये Braintree का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन है,
और आपको नेम दिख रहा होगा पेपल ब्रेनट्री। सो पेपल एक कंपनी है जो कि सबसे पुरानी और सबसे मार्केट की रेपुटेड कंपनी है, जो कि तुम्हारे पेमेंट वाली स्टफ को हैंडल करती है। तो पेपल इज समथिंग कि पेपल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करते हो, यू कैन यूज एनी लैंग्वेज। सो गेटवे इज बेसिकली कि आपको मान लो कि थोड़ा सा मैं डीप जाऊं तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आई थिंक कि अभी तुम्हें अच्छा साउंड नहीं करेगा या अभी ज्यादा समझ नहीं आएगा, बट इन फ्यूचर जब एज अ डेवलपर तुम वर्क कर रहे होगे तो ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साउंड करेंगी। सो क्या होता है कि आपने सुना पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। सो इनसाइड द पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन we have one terminology called gateway. So gateway is something कि एक्चुअली जो एप्लीकेशंस होते हैं बेसिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो एप्लीकेशंस होते हैं, these एप्लीकेशंस को हम कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से। फर्स्ट इज मोनोलिथिक एप्लीकेशन, आई मीन मोनोलिथिक एप्लीकेशन जो कि हमारा भी है, और दूसरा होता है माइक्रो सर्विस एप्लीकेशंस। तो monolithic applications means कि the dependency, the server and everything is controlled by this single application. So it means what? Any problem is occurring inside your application. If you face any problem inside your application, and it means what? It means what? If your or something like if your server is down for some time, then all application is down for a while. तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर तुम्हारा सर्वर इन केस की मान लो डाउन हो गया, तो उस टाइम पे तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन डाउन रहेगी। बट नाउ अ डेज देयर इज अ थिंग which is comes into the picture is microservice architecture. So inside the microservice architecture, basically what happens कि तुम्हारी पूरी application is categorized into different services. So what I want to say, just go with a practical example. So practical example, what happens if you are just scrolling Mintra or what, any e-commerce website like what we Flipkart, use? Amazon. So तुम देखते होगे, ये तो मैंने बहुत बार देखा है, तुम लोग भी बहुत बार नोटिस करे होगे कि जब तुम क्या कौन सा है फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे जाओगे, तो रात के टाइम पे जब तुम कोई चीज कार्ट में ऐड कर रहे होगे, तो उस टाइम पे तुम्हें दिख रहा होता है कि इट इज आउट ऑफ सर्विस। कभी देखिए हो? या साइट इज अंडर मेंटेनेंस। सर ये मोस्टली ये बैंकिंग का जो एप्स है ना उसमें रहता है, उसका नोटिफिकेशन आता है। तो साइट इज अंडर मेंटेनेंस, बट तुम ये भी नोटिस कर रहे होगे कि पूरी साइट पे नहीं दिख रहा होता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में दिख रहा होता है कुछ। अब पूरी साइट मेंटेनेंस में है तो वो अलग चीज है, बट या कुछ चेंजेस डिप्लॉय हो रहे हैं तो उस टाइम के लिए सर्वर डाउन कर दिया जाता है बैंक का। बट अगर तुम मिंत्रा ई कॉमर्स वेबसाइट पे आओगे तो तुम्हें वो सारे तुम्हें क्रॉल करके तुम अपने सारे कैटेगरी के कपड़े एंड ऑल जितने भी कैटेगरीज हैं वो देख सकते हो। बट तुम कार्ट में ऐड करने जाओगे तो उस टाइम बता रहा होता है
out of service, or site is under maintenance, or this part is under maintenance, बट तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन डाउन नहीं रहती है, कुछ फ्यू पार्ट्स ही डाउन रहते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स which is followed by microservice architecture. So inside the microservice architecture, there is something called gateway. Gateway. ठीक है, देखोगे अगर मैं Node.js API गेटवे की बात करूं तो ब्रिंगिंग माइक्रो सर्विसेज विथ ईज, तो यहाँ पे अगर आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे तो एपीआई गेटवे के बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखाता हूँ कुछ इसमें. यस, सो एपीआई गेटवे इज समथिंग कि ये गेटवे क्या कर रहा होता है कि तुम्हें सारी फंक्शनैलिटी दे रहा होता है, माइक्रो सर्विस 1 2 3, डेटाबेस, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, डेवलपर, वेब, मोबाइल, एक एपीआई गेटवे के थ्रू. तो अब क्या है कि हमारे एप्लीकेशन में हम जो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन. पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, और आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हो कि यू आर डन अ पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन. सो पेमेंट गेटवे, अब क्या है कि ये जो गेटवे इंटीग्रेशन तुम पेमेंट गेटवे कर रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हारी कौन हैंडल कर रहा है? समथिंग कॉल्ड ब्रेनली, यही कर रहा है ना, या तुम पेपल बोल दो. ये ब्रेनली और पेपल जो कंपनी है, ये तुम्हारी पूरे इसका पेमेंट का लेखा जोखा रख रही है. और नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग दिस पेपल और ब्रेनली इनसाइड योर एप्लीकेशन. तो जो तुम एप्लीकेशन में इन ब्रेनली या पेपल को इंटीग्रेट करोगे अपने एप्लीकेशन में with the help of this gateway. So these companies provide you a gateway to integrate their functionalities inside your application. Is it make sense? Guys, समझ रहे हो? यस सर. तो अब के टाइम पे क्या होता है ना कि बिजनेस करना काफी इजी हो गया है, बिकॉज जब आप एज अ प्रोडक्ट टीम और प्रोडक्ट ऑनर काम करते हो, तो अब तुम्हें देयर आर लॉट ऑफ स्टफ व्हिच यू हैव टू हैंडल. It means you have to handle the business records, you have to handle all the business analytics things, and the code development part or IT part or technical things. So अब टेक्निकल में भी वो कंपनी खुद का पेमेंट बनवाए और इंटीग्रेट करवाए, तो वो किसी थर्ड पार्टी को दे देता है कि भैया ये भसड़ तुम लो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि तुमने कोई बिजनेस करा और तुम्हारे पास शिपिंग कराने के लिए तुम्हारे पास कंपनी नहीं है, या तुमने उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट नहीं करा, तो क्या तुम बिल्कुल कोर से जाके शिपिंग के लिए तुम सारी चीजें करोगे? नहीं करोगे ना. तो तुम क्या करोगे? किसी शिपिंग वाली कंपनी को तुम वो क्या दे दोगे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट देते थे सर, सीप रॉकेट वो सब हो गया ना. यस, तो मैं तुम्हें एक ये दे रहा हूँ, बिजनेस दे रहा हूँ कि इन माय एप्लीकेशन ऑल दी शिपिंग थिंग्स जो भी होगा यू हैव टू कवर. तो अब अब मान लो कि एक यूजर या एक कंपनी, टेक्निकल कंपनी अपना काम कर रहा है और शिपिंग की चीजें किसी एक्स पर्सन पे डिपेंडेंट है या किसी एक्स कंपनी पे डिपेंडेंट है, तो तुम क्या करोगे? शिपिंग से बोलोगे कि भैया फॉर नॉन टेक्निकल थिंग्स यू आर गोइंग टू हैंडल ऑल दिस स्टफ, बट फॉर द यूजर्स जो टेक्निकली हमसे कनेक्टेड है, उनको दिखाने के लिए वो रिकॉर्ड तुम्हें क्या देना पड़ेगा? एक गेटवे देना पड़ेगा जो हम अपनी एप्लीकेशन में क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे तुम्हारे पूरे यूजर्स का क्या रिकॉर्ड और मूवमेंट, और मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट्स की मूवमेंट उस यूजर तक पहुंच पाए. इज इट मेक सेंस? तो ये गेटवे का काम होता है. तो पेमेंट, अब पेपल क्या है? पेपल एक कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है. तो पेपल क्या करती है? तुम्हें पेमेंट वाली चीजें, मतलब बैंक से पैसे कैसे काटना है, कितना परसेंट, उसके लिए वो कुछ कमीशन लेते हैं एज अ यूजर, और क्या करते हैं तुम्हारी
बैंक से कैसे पैसे कटेंगे, कैसे वो, बस वो तुम्हें क्या देगा कि हाँ पैसे मिल गए हैं, इस प्रोडक्ट का पैसा अब मुझे मिल गया है, अब ये हमारी और तुम्हारी डील है कि वो पेमेंट कैसे तुम्हें लेना है। वो कंपनी और पेपल के बीच की क्या है, कंपनी और पेपल के बीच की क्या है, अपने रिलेशंस है, तो वो अपने रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। बट अब यूजर को वो चीजें कि तुम्हारी पेमेंट हुई या नहीं हुई है, वो सब कुछ, वो डेटा कौन दे रहा होगा? आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन पेमेंट गेटवे तुम्हें वो डेटा दे रहा होगा, जो वो डेटा तुम कहाँ शो कर रहे होगे? अपने एप्लीकेशन पे। और उसके बेसिस पे तुम्हारे पास यूजर के भी रिकॉर्ड होंगे, और जो पेमेंट तुम्हारे यूजर्स करा है पेपल वाले को, वो रिकॉर्ड रहेगा। जिससे क्या होगा कि कल के डेट में तुम अपनी, उसको क्या बोलते हैं, अपनी जो भी बिजनेस बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो भी बोलते हो, जो भी सीट बनती हो उसकी, वो सीट बन के तुम्हारी पेमेंट एंड ऑल का बैलेंस शीट या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हाँ ट्रांजेक्शन सीट जो भी बनता होगा कंपनीज के बीच का, वो बनता होगा। तो ऐसी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि तुम्हारे छोटे छोटे का, अब क्योंकि आजकल मैं बेसिकली मैं खुद अब मूवमेंट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम कंपनी एंड, कि हमारी कंपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूव कर रही है, एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो एक ऐसी एप्लीकेशन पे मैंने अभी जस्ट अपनी कंपनी के लिए काम स्टार्ट करा है, तो दीज एप्लीकेशन इज आल्सो फॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी पहले क्या था कि ये भी बहुत बड़ी अब आईटी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल थिंग है कि पहले जो वेब यूजर्स थे वो सिर्फ वेब यूजर्स थे, अब उसके एप्लीकेशंस हैं, वो वेब वेब क्रॉल करता है, वेब पे जाता है, एप्लीकेशंस पे जाता है। अब तुम्हारे पास एक और प्लेटफॉर्म ऐड हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ओटीटी के भी जो तुम अपने स्मार्ट टीवीज में देखते होगे तो सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो एप्लीकेशंस की भी डिजाइनिंग हो रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ जो कि धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। तो अब उसमें भी क्या होता है कि तुम्हें बहुत सारी चीजें एज अ बिजनेस तुम्हें, हमें थर्ड पार्टी की गेटवे यूज करनी होती है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। और ये पेमेंट तुम खुद का भी बना सकते हो, बट कोई भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तुम खुद की गेटवे बनाओगे तो वो सारा भसड़ तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? सो वी हैव, तो ये पेपल, मैक्सिमम कंपनीज पेपल यूज करती है, बड़ी सी बड़ी कंपनी। सो आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल। पेपल क्लाइंट्स, सर ये पेपल का गेटवे इंटीग्रेट करने को चार्जेस वगैरह नहीं पड़ते हैं? सॉरी 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 2% प्लस जीएसटी लेते हैं वो लोग अपने से, जो भी पेमेंट रहेगा ना उसका 2% प्लस जीएसटी इसका देते जो पेपल का सर ये जो गेटवे रहेगा, ऐसे जो गेटवे हम लोग भी क्योंकि बैंक से तो प्रोवाइड करते ही हैं, बट उसमें कुछ चार्जेस रहते हैं, तो पेपल क्या वो चार्ज नहीं लेता है? बिल्कुल लेता है, वही तो बता रहा है, वो 2% प्लस जीएसटी। वो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, हाँ हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं सर। जब हम नहीं लोग तो नहीं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि डेवलपमेंट मोड के लिए पेपल आपको फ्री देता है चीजों को यूज करने के लिए, बट जैसे आप लाइव इन्वायरमेंट पे भेजोगे तो उसके लिए वो चार्जेस डाल देता है। तो उसकी कुछ मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, वो आपको उसके सर्विस के हिसाब से आपको देने पड़ते हैं, बट हाँ, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए वो फ्री होता है। सर अभी इंडिया में जो अपना इंडिया में चल रहा है वो पेटीएम एंड इसका रेजर पे का ज्यादा चल रहा है ना, पेटीएम का पेमेंट गेटवे रेजर पे का। देखो रेजर पे का गेटवे क्या है ना कि इफ यू आर मेकिंग अ बिजनेस, तुम कभी भी एक कंट्री के कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। पेपल इज समथिंग जो कि ऑल ओवर दी क्या बोलते हैं, वर्ल्ड यूज करा जाता है। ग्लोबली है तो पेपल। उसके अंदर तुम्हारी जो करेंसी कन्वर्जन है वो भी बहुत इजीली होती है, और तुम्हारी जो पेमेंट है, अगर फॉरेन से भी पेमेंट आ रहा है तो यू कैन इजीली गेट आफ्टर पेइंग सम परसेंटेज। बट पेटीएम इज समथिंग जो कि इंडियन मार्केट के लिए है। रोजर पे आई एम नॉट श्योर अबाउट रोजर पे, बट पेटीएम का मैं बता रहा हूँ। तो आज तुम अगर पेटीएम यहाँ इंटीग्रेट करते हो, मान लो कल के डेट में तुम्हें बिजनेस यूएस में लेके जाना है, या कल के डेट में तुम्हें अपना बिजनेस यूके के किसी मार्केट में डालना है, तो वहां पे पेटीएम सपोर्ट नहीं है, वहां के यूजर्स पेटीएम यूज नहीं करेंगे। तो एज अ ग्लोबल जो चीजें होती हैं वही डेवलपर्स यूज करते हैं, वो एप्लीकेशंस में यूज होते हैं कि इन केस इफ यू आर गोइंग टू मेक अ डायनामिक देन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, कि तुम्हें उस टाइम जाके फिर सोचना नहीं पड़े कि हम पेटीएम से छोड़ के अब जाके पीपल को देते हैं अपनी सारी
ये चीजें, तो ये सब चीजें पहले डिसाइड होती हैं। तो मोस्ट जो कॉमन है वो पेपल ही है। आप देखते होगे फ्लिपकार्ट पे भी देखते होगे, जब पेमेंट करने जाते होगे तो नीचे पेपल का एक छोटा सा टैग आ रहा होता है। क्रेडिट कार्ड आप यूज करते होगे तो। ध्यान नहीं दिया सर। हाँ सॉरी। सर, आता है पेपल का। तो बहुत सारे यूजर्स है पेपल के। तो और जो तुम ब्राउजर पे कह रहे हो, ब्राउजर पे ये सब आई डोंट थिंक कि ब्राउजर पे के पास इतना बैंडविड्थ है कि वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में काम कर पाएगा। बट लेट मी चेक देयर क्लाइंट्स। पीपल क्लाइंट्स, गेटवे क्लाइंट्स। चलो पढ़ लेना सब इसमें, ठीक है। तो बेसिकली जो पीपल हम यूज करने वाले हैं, या हम जो ब्रेनली यूज करने वाले हैं, तो बेसिकली आप किसी भी गेटवे का आप जाके सीधा गेटवे से लॉगिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए एज अ डेवलपर अगर आपको पेमेंट, आपको गेटवे इंटीग्रेट करनी है, उसके लिए क्या होता है, सैंडबॉक्स होता है। तो आई एम गोइंग टू यूज ब्रेनली सैंडबॉक्स। You have also searched Brainly Sandbox. So yes, this is Sandbox for Brainly payments. And now you can log in or sign up. So I'm going to use others. Pandey, company name, Ikeda, United States. Now I'm in India. Sorry, GHI. Yes, India. And now 04. Give me a second. Which ID I can use? Others Pandey 0417 @gmail.com. ठीक है। लॉग इन। Let me check. So I'm going to log in it. Brainly complete sandbox sign up. Username. Okay, so let me let me just hide my credentials. ठीक है। 04. तो पासवर्ड नहीं दिख रहा है ना तुम लोग को? ओके, चलो ठीक है। हाँ,
Mm, 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 mm. Okay. Yes, we have successfully created a Brainly account, and we are ready to use the sandbox. So you have different actions. You can also log in and just go through these documentation, transaction summary, settlement batch summary, disbursement summary, create new customer and all. So we have this setting option. So when you go inside this setting option, then you have the field called API. So just go in this API and you have to just create a new API. So when you create this new API, you have a public key, you have a private key, you have a last use or actions. So yes, I'm going to generate a new API key. And yes, which is the first. ठीक है. So let me delete it inside my API. Okay. So again, I'm going to generate. Yes. So view it and just going to set inside my env, inside my backend. So you have the that .env file, and now you can save it something like Brainly public key, private key, and merchant ID. So Brainly, okay, ब्रेन ट्री है ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रेन ट्री पब्लिक की. So public key should be what? This. Okay. And yes, now brain tree private key. This private key and brain tree merchant ID. Merchant ID. And this is what this merchant ID. And that's it. You have the public key, you have the private key, and you have the merchant key. Only what you have to change when you deploy this application to the server, and if you have to give this functionality to the normal user, just do some payment on it, then only you have to change some configuration thing inside our inside our server file. So once you have deployed this inside the server, only these keys has been changed, and these keys should be replaced with the original original Braintree keys. क्योंकि आप अभी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जब तक आपको इंटीग्रेशन करना है, दीज आर द कीज विच इज बेनिफिशियल फॉर अस. बट जैसे आप इसको प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय कर दोगे और नॉर्मल यूजर के लिए आप नॉर्मल यूजर के लिए रियल ट्रांजेक्शन करवाना चाहते हो, तो ओनली यू हैव टू चेंज दिस private, public, and merchant ID on the server, so it is going to be used with on the real applications. Is it make sense? Yes. So now what I can do, I can simply make the
like what? Like, yes, payment stuff. So yes, I am going to make another route here. अभी मैं कोई टेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सर्वर सही चल नहीं रहा है, बस मैं बॉयलरप्लेट को डाल देता हूँ. तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेमेंट and then API/payment. API/payment. और आपको क्या करना होगा, एक कंट्रोलर बनानी पड़ेगी यहाँ पे, पेमेंट कंट्रोलर. Now what you can do, just go inside your controllers. Okay, so पेमेंट राउट है ना, तो हमें राउट्स बनानी है ना यहाँ पे, पेमेंट routes. That's it. Now you can make the route for the payment and just make what payment routes.js. So just payment routes, just import express from express. और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये राउटर यूज करना पड़ेगा. यस, यू आर गोइंग टू यूज दिस राउटर. और आपको उठाना पड़ेगा कंट्रोलर. तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं राउटर डॉट, मैं एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ गेट का, जो मुझे लेके आके देगा क्या, ब्रेंट्री का ब्रेंट्री का टोकन. सो यही टोकन हमें इंपॉर्टेंट होगा फॉर कोई भी पेमेंट कराने के लिए. जैसे हमने ऑथेंटिकेशन टोकन बनाया था for payment gate for the logged in users. Similarly, we are going to make another token for the payment. So when your Braintree is connected with your application, then it gives you a token. So you are going to store this token and you are going to utilize this token when you are making a request on the payment part. Does it make sense? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बता दो. तो मैं बना देता हूँ Braintree and then we have get token. और उसके साथ साथ मुझे उसकी यूजर आईडी भी चाहिए. एंड देन मुझे मिडलवेयर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो मैं ये प्रोटेक्ट मिडलवेयर यूज कर लेता हूँ. और दूसरा कि मुझे कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा. तो फर्स्टली आई हैव टू यूज दिस प्रोटेक्ट एंड देन वी हैव, क्योंकि देखो यार, तुम पेमेंट वाली चीजें हैंडल कर रहे हो, इसको तो ऑथोराइज बनाओगे ना, ऐसे ही थोड़ी छोड़ दोगे इसको. So I'm going to make another controller here, which is what, payment controller.js. And here आपको अभी कुछ नहीं करना है. आप सिंपली क्या कर दो कि सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंपोर्ट कर लेना है यूजर को, क्योंकि यूजर का डिटेल चाहिए. तो इंपोर्ट यूजर फ्रॉम this models / user model.js. सेट. और तुमको इंपोर्ट करना है एक और चीजें, जो कि है तुम्हारी env फाइल. env कैसे इंपोर्ट करा था हमने, अच्छा ठीक है, वो तो वहां पे इंपोर्टेड है. तो पेमेंट कंट्रोलर, ठीक है. और आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक और चीजें आपको करनी पड़ेगी, जो कि है ब्रेनट्री का इंस्टॉलेशन. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to install the Braintree on the Braintree package. So let me check कि Braintree हम
कहाँ इंपोर्ट करते हैं, चलो ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं इंपोर्ट बना लेता हूँ। तो यस, इंपोर्ट ब्रेन ट्री फ्रॉम वेयर, ब्रेन ट्री itself. Now const gateway is equals to brain tree dot connect. देखो, यहाँ तुम ब्रेन ट्री यूज कर रहे हो, तो जब भी तुम इस ईपीआई पे हिट करोगे, गेटवे वाली पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कनेक्ट करवाना है। और मैं क्या कनेक्ट करवाने जा रहा हूँ, तो मैं ब्रेन ट्री कनेक्ट नहीं कराता हूँ। ओके 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 ओके। सो ठीक है, अभी मैं सिंक बना देता हूँ। रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स and yes, console.log he payment integration started. That's it. Now you have to do export this gateway, and that's it. And payment route is not defined, so ठीक है, मैं गेटवे को कॉपी कर लेता हूँ। और अब मैं आता हूँ अपनी राउट्स के अंदर, पेमेंट राउट्स के अंदर, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं गेटवे फ्रॉम कंट्रोलर्स पेमेंट कंट्रोलर डॉट जीएस। और अब मैं इस गेटवे को पास कर दूंगा यहाँ पे। एंड यस, पेमेंट राउट्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट जीएस में जाना पड़ेगा और मुझे यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पेमेंट routes from this backend, and this routes, and then you have a payment routes.js. So just go and use this inside here, and yes, it is already done here. So yeah, payment routes is not app.use. क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट राउट्स तो हो जाना चाहिए। जस्ट विजिबल ऑन स्क्रीन। Yes, sir. ठीक है, पेमेंट राउट्स इज नॉट डिफाइंड, तो हो सकता है ये बड़ा, कितना बड़ा हो गया, अरे यार ये कैसे छोटा होगा यार, ये कैसे छोटा होगा, मैंने ऐसा इतना बड़ा कहीं पे आ ही नहीं रहा ऑप्शन। सर ये डाउनवर्ड वाला एरो प्रेस करोगे जब हो जाएगा वो। डाउनलोड वाला कौन सा? सर वापस वैसे सर हम्म। जहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन है ना उसके जस्ट नियर बाई है ना, इससे जस्ट ये नहीं सर, इसके जस्ट ऊपर वाला। ये अच्छा, हाँ, नाइस। सो payment routes is not defined, so let me just copy it and paste it. Make sense little bit. Full stack app.js 31st line p app.use payment routes is not defined. ठीक है, अच्छा
तो ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट करना भूल तो नहीं गया। हाँ, मुझे एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो cannot find module package. So I'm going to install the Braintree package. So just let me check npmi Braintree. And yes, this is the package. So I'm going inside my full Ecommerce and just install this package. So because we are using this Braintree here, but अभी इसका कोई यूज हमने करा नहीं है, but वो मांग रहा था तो मैंने इंस्टॉल कर दिया. So I think yes, now it is ready to use. So yeah. So that's it. Like we have all the boilerplate is ready, and on yesterday, first thing is what is the problem which we are facing today is request.header issue. We are going to solve it, and apart from that, we are just integrating our front end and back end stuff of the payment gateway, and then we are going to use this inside your application and try to implement it. Okay, so yes, that's it for today. Now shit. Yes. Is it 24 June? Yes. So कल का भी attendance था. So we are going to take it again. Abhishek, Present, sir. Prateek, Bhavesh, प्रेजेंट सर, कल भी था सर मैं. Aman Kumar Singh, Present, sir. Vinay Pratap Singh, Sagar Madhok, Yes, sir. Present, sir. कल भी present था, sir. Bharat Santosh, Komal Tiwari, Kumarjeet, Chandan Kumar, Himanshi Parasar, Present, sir.
Dupati Bhavna, Present, sir. Present. Jai Kisan Pandey, Afzal Akbar Shah, प्रेजेंट सर, बोथ डेज, कल भी था। Prakash Das, यस सर, कल भी था। Ayusa, Ayusa, Sujoy, Present, sir. Sujoy, Nikhil Tyagi, हाँ Nikhil पर Tyagi, Ausaf Anwar, यस सर, प्रेजेंट सर, कल भी था मैं। Ashish Roy, Ashish Roy, Kesav, Yes, sir. Vijay Singh, Vijay Singh, आशुतोष सिंह, यस सर, कल भी था। सानू रस्तोगी, यस सर, कल भी थे। मोहम्मद सालिद, मोहम्मद सालिद, संतोष तिवारी, संतोष तिवारी, राहुल गेजवल, आशुतोष गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, निखिल रदाकर, निखिल रदाकर, विद्या सुंदरकर, Present, sir. अथांग, अथांग, कुणाल सिंह राजपूत, कुणाल सिंह राजपूत, ओके, निमिष शर्मा, यस सर, प्रेजेंट सर, बोथ डेज। सत्यजीत पांडा, सर कल की भी लगा दी। हाँ, सत्यजीत पांडा, विपिन कुमार, हाँ हाँ बताओ। So
विपिन कुमार, विपिन कुमार, आयुष कुमार sir. Okay, so I'm going to push the code and then we will ready. Okay, so yes, we have the get status, get add all status, get commit minus m, payment gateway integration, get status, get post origin master. Yes. So yes, it is done now. So okay, so just go through all the videos and just go with the code flow. So we are we will go to integrate the payment stuff tomorrow. So bye guys. Okay, bye. हाँ आ रही है Yes, okay, bye team.